In this video, we will see all the important questions from general pharmacology. First is the definition of drug. World Health Organization WHO defines drug as any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. WHO defines drug as any substance or product that is either used or intended to be used, to modify or explore physiological systems and pathological states for the benefit of the recipient. Whoever is receiving the drug, it is for their benefit. So WHO defined drug as any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological systems and pathological states for the benefit of the recipient. The second definition of pharmacy. Pharmacy is the branch of science that deals with the preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of the drugs. So, pharmacy, it is a branch of science that deals with preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of drug. It is a branch of science that deals with preparation of drug, preservation of drug, standardization of drug, compounding of drug, dispensing, and proper utilization of drug. So, pharmacy में what things are dealt: preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of drugs. Pharmacy, it is a branch of science that deals with preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of drug. So it is a branch of science that deals with preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of drugs. There are 3P: preparation, preservation, and proper utilization. Preparation, and proper utilization. Then C and D. C for compounding, D for dispensing, and one S, that is standardization. So pharmacy, it is a branch of science that deals with preparation, preservation, standardization, compounding, dispensing, and proper utilization of the drugs. There is a term known as essential medicines. According to WHO, essential medicines are those that satisfy the healthcare needs of majority of the population. According to WHO, essential medicines are those that satisfy the healthcare needs of majority of the population. They should be of assured quality, available all times, in adequate quantities, and in appropriate dosage forms. So because they satisfy the healthcare needs of majority of the population, essential drugs should be of assured quality, available at all times, adequate quantity, and in appropriate dosage forms. Essential medicines should be of assured quality, should be available all times, should be in adequate quantities, and in appropriate dosage form. They should be selected with regard to disease prevalence in a country, evidence of safety and efficacy, and comparative cost effectiveness. Okay, so essential medicines are those that satisfy the healthcare needs of majority of the population. They should be of assured quality, available all the times, should be in adequate quantity, and in appropriate dosage form. On what basis are they selected?
They should be selected with regard to disease prevalence in the country, evidence of safety and efficacy, and comparative cost effectiveness. Disease prevalence in the country, evidence of safety and efficacy, and on the basis of cost effectiveness. Essential medicine should be selected on the basis of disease prevalence in the country, on the basis of evidence of safety and efficacy, and comparative cost effectiveness. The examples of essential medicines are iron and folic acid preparations for anemia of pregnancy, anti-tubercular drugs like isoniazid, rifampicin, pyra- pyrazinamide, and ethambutol. So, iron and folic acid preparations for the anemia in pregnancy is an example of essential medicine. Anti-tubercular drugs like isoniazides, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol. They are example of essential medicines because tuberculosis is prevalent in our country. So anti-tubercular drugs like rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol are essential medicines. They should be of assured quantity, assured quality, and should be available at all times in appropriate dosage form. Example, iron and folic acid preparations for anemia of pregnancy, and anti-tubercular drugs like isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol. Another term, orphan drugs. Drugs that are used for diagnosis, treatment, and prevention of rare diseases are known as orphan drugs. Orphan drugs are the drugs that are used for diagnosis, treatment, and prevention of rare diseases. Orphan drugs are used for diagnosis, treatment, and prevention of rare diseases. The expenses incurred during the development, manufacture, and marketing of drug cannot be recovered by the pharmaceutical company from selling the drug. क्योंकि orphan drugs are for rare diseases. That's why अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है, डेवलप करता है और मार्केट करता है, तो उससे उसका लॉस होगा. द फार्मास्यूटिकल कंपनी विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स मनी because it is for rare diseases only. So the expenses incurred during the development, manufacture, and marketing of the drug cannot be recovered by the pharmaceutical company from selling the drugs. क्योंकि ये रेयर डिजीज़ेस के लिए होते हैं, ऑर्फन ड्रग्स रेयर डिजीज़ेस के लिए होते हैं, इसलिए उनका सेलिंग उतना नहीं होगा. ठीक है, इसलिए द फार्मास्यूटिकल कंपनी विल नॉट बी एबल टू recover the expenses that they have spent in the manufacture, development, and marketing of that drug. Example of orphan drug, digoxin antibody, which is used in digoxin toxicity. Digoxin toxicity is a very rare disease. So digoxin antibody is an orphan drug. Fomepizole, which is used for methyl alcohol poisoning. Example of orphan drugs, digoxin antibody for digoxin toxicity, and fomepizole for methyl alcohol poisoning. Orphan drugs are the drugs that are for the diagnosis, treatment, and prevention of rare diseases. The expenses incurred during the development, manufacture, and marketing of the drug cannot be recovered by the pharmaceutical company from selling the drug. Example of orphan drugs, digoxin antibody for digoxin toxicity, and fomepizole for methyl alcohol poisoning. Next term is OTC drug or over the counter drug. OTC drugs stands for over the counter drugs or non prescription drugs. Over the counter drug or non prescription drug or OTC drugs. These drugs can be sold to a patient without the need of doctor's prescription. Example, paracetamol and antacids. Paracetamol and antacids are over the counter drug, OTC drug. Example, paracetamol and antacids. These drugs can be sold to a patient
without the need of doctor's preparation. OTC drugs are the drugs that can be sold to a patient without the need of a doctor's prescription. They are also known as non prescription drug, example paracetamol and antacids. Let's see the sources of drug information. There are two sources. One is pharmacopoeia and formulary. Pharmacopoeia, it is a source of drug information. Pharmacopoeia, it is a book which contains list of established and officially approved drug with description of their physical and chemical characteristics and test for their identification, purity, methods of storage, etc. Pharmacopoeia, it is a book. Pharmacopoeia, it is a book and it contains a list of established and officially approved drug. Pharmacopoeia, it's a book that contains list of established and officially approved drug with description of their physical and chemical characteristics, test for their identification, purity and methods of storage. तो उस बुक में उन ड्रग्स का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्ड होगा, टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड मेथड्स ऑफ स्टोरेज डिस्क्राइब्ड होगा. ठीक है, तो इस बुक में ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग्स का फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड मेथड्स ऑफ स्टोरेज दिया रहता है. सम ऑफ द फार्माकोपोयाज आर द इंडियन फार्माकोलॉजिकल. See, examples of pharmacopoeia are Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, that is BP, and United States Pharmacopoeia. So, Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, and United States Pharmacopoeia, these are certain examples of pharmacopoeias. Other sources of drug information are National Formulary, Martindale, the Extra Pharmacopoeia Physicians Dex Reference, American Medical Association Drug Evolution, Textbook and Journals of Pharmacology and Therapeutics, drug bulletins, databases like Micromedics, Medlin, Cochrane Library, etc. Information can also be obtained from pharmaceutical companies through their medical representatives, meetings, and drug advertisements in journals. Okay, so pharmacopoeia, it's a source of drug information. It is a book which contains a list of established and officially approved drug with description of their physical and chemical characteristics and test for identification, purity and methods of storage. They will have the description of physical and chemical characteristics of the drugs, test for identification, purity and method of storage of those drugs. Some of the pharmacopoeias are Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia. Now let's see the routes of drug administration. The routes of drug administration are divided into local and systemic. Systemic is further divided into enteral and parenteral. Enteral, example oral, sublingual and rectal. Parenteral, example injection, inhalation and transdermal. So route of administration of drug are divided into local and systemic. Systemic is further divided into enteral and parenteral. Parenteral, example injection, inhalation and transdermal. Enteral, example oral, sublingual and rectal. Systemic is divided into enteral, parenteral. Enteral, example oral, sublingual and rectal. Parenteral, example injection, inhalation and transdermal. See, systemic routes. Drug administered by systemic routes enter the blood
and produce systemic effects. Systemic route से दे रहा है तो they will enter the blood and produce systemic effects. Systemic में पहला टाइप था enteral route. This includes oral, sublingual and rectal routes. Oral routes. Oral route, it is the most common and acceptable route for drug administration. Dosage forms are tablet, capsule, powder, syrup, linctus, mixture, suspension, etc. Example, paracetamol tablets for fever, omeprazole capsule for peptic ulcer are given orally. Paracetamol tablet, omeprazole capsule, these are example of oral routes. Tablets could be coated, that is covered with a thin film of another substance, or uncoated. They are also available as chewable, example albendazole, dispersible, example aspirin, mouth dissolving, example ondansetron, and sustained release forms. Capsules have soft or hard cells. Capsules जो है उनके पास shell होता है which can be soft or hard. Example of oral route, paracetamol tablets for fever, omeprazole capsule for peptic ulcer. Albendazole, it is a chewable tablet. Aspirin is dispersible tablet, and ondansetron is mouth dissolving tablet. Okay, albendazole is chewable, aspirin dispersible, and ondansetron is mouth dissolving. Albendazole chewable tablet, aspirin dispersible, and ondansetron, it is a mouth dissolving tablet. Ondansetron is a mouth dissolving tablet. Let's see the advantages of oral routes. Safer, cheaper, painless, convenient for repeated and prolonged use, can be self administered. So, oral route is safe, cheap, painless, convenient for repeated and prolonged use, and can be self administered. Oral route, safe, cheap, painless, convenient for repeated and prolonged use, and can be self administered. Disadvantages, it is not suitable for or in unpalatable and highly irritant drugs. So, unpalatable and highly irritant drugs cannot be given by oral route. Highly irritant drugs and unpalatable drugs cannot be given by oral routes. It cannot be given in unconscious patient. Drugs cannot be given by oral route in unconscious patient. Uncooperative and unreliable patients, maybe it cannot be given on by oral routes. Patients with severe vomiting and diarrhea, emergency as onset of action of orally administered drug is slow. So ओरल रूट का डिसएडवांटेज क्या है कि जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स है या अनपैलेटेबल ड्रग्स है दे कैनॉट बी गिवन बाय ओरल रूट्स. Oral route cannot be given in unconscious patient, unreliable patient, uncooperative patients. It cannot be given in patients who are severely vomiting and have diarrhea. It cannot be given in emergency condition because they have a slow onset of action. And there are certain drugs like aminoglycosides, insulin, and lignocaine which cannot be given by oral route. Aminoglycoside, it is a unabsorbable drug. Aminoglycoside cannot be absorbed, so it is not given by oral route. Insulin, it is destroyed by the digestive juices. Insulin cannot be given by oral route because it will be destroyed by digestive juices. And lignocaine are drugs with extensive first pass metabolism. So oral route, safe, cheap, painless, convenient, self administrable, these are the advantages. Disadvantage कि ये unconscious patient में नहीं दे सकते, uncooperative unreliable patients में नहीं दे सकते,
Highly irritant drugs cannot be given by oral route, not good for emergency. And certain drugs like aminoglycosides, insulin, and lignocaine cannot be given by oral route. Aminoglycoside, it is unabsorbable drug. Insulin is destroyed by digestive juices. Lignocaine has a very high first pass metabolism. So aminoglycosides, insulin, and lignocaine are not given by oral route. Then sublingual route. The preparation is kept under the tongue. Sublingual means under the tongue. The drug is absorbed through the buccal mucous membrane and enters systemic circulation directly. Example, nitroglycerin for acute attack of angina and buprenorphine. Nitroglycerin and buprenorphine are example of sublingual route. Sublingual route kept under the tongue, absorbed from the buccal mucous membrane and enters the systemic circulation directly. Example, nitroglycerin for acute attack of angina and buprenorphine. Nitroglycerin and buprenorphine are example of sublingual routes. Nitroglycerin and buprenorphine. Advantages of sublingual route. क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, इसीलिए एंजाइना के अटैक में नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं बिकॉज सबलिंगुअल रूट हैज़ अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन. एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट. सो एंजाइना में जब रिलीफ मिल जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो टैबलेट है उसको स्पिट कर देते हैं. सो एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट. It bypasses the first pass metabolism. Self administration is possible. So oral route, sublingual route का एक common advantage है कि self administration is possible. Other advantages of sublingual route: quick onset of action. Action can be terminated by spitting out the tablet. It bypasses the first pass metabolism and self administration is possible. Disadvantage: it is not suitable for irritant drug and lipid insoluble drug, and it is not suitable for drugs with bad taste. Sublingual route is not suitable for irritant drug, not suitable for lipid insoluble drugs, and drugs with a bad taste. Sublingual route is not suitable for irritant drugs, lipid insoluble drugs, and drugs with a bad taste. Rectal route. Drugs can be given in form of solid or liquid through rectal route. Suppository. Suppository, it can be used for local or topical effect as well as systemic effect. Example, indomethacin for rheumatoid arthritis. Suppository, it can be used for local as well as systemic effect. Indomethacin for rheumatoid arthritis is an example of suppository. Indomethacin for rheumatoid arthritis is an example of suppository. Then enema. Retention enema can be used for local effect as well as systemic effect. The drug is absorbed through rectal mucous membrane and produces systemic effect. Example, diazepam for status epilepticus in children, methylprednisolone enema in ulcerative colitis. Rectal route, they can be given in solid or liquid forms. Suppository and enema, these are two types of rectal route. Suppository example, indomethacin for rheumatoid arthritis. Enema example, diazepam enema for status epilepticus and methylprednisolone enema for ulcerative colitis. Diazepam for status epilepticus in children and methylprednisolone enema for ulcerative colitis are example of enema. Indomethacin for rheumatoid arthritis, example of suppository. Diazepam for status epilepticus in children and methylprednisolone enema in ulcerative colitis, example of enema. Next we will see transdermal route or
Transdermal therapeutic system, transdermal route or transdermal therapeutic system. The drug is administered in the form of patch or ointment that delivers the drug into the circulation for systemic effect. Transdermal route या transdermal therapeutic system में drug is administered in the form of a patch or ointment that delivers the drug into the circulation for systemic effect. Okay, so it is also an example of systemic route of administration. ट्रांसडर्मल या थेराप्यूटिक ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम में एक पैच या ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं दैट विल डिलीवर द ड्रग इनटू द circulation for systemic example of transdermal therapeutic system scopolamine patch for Scialorrhea and motion sickness. Scopolamine patch for Scialorrhea and motion sickness. Then nitroglycerin patch or ointment for prophylaxis of angina. Nitroglycerin patch or ointment for the prophylaxis of angina, for the prevention of angina. Nitroglycerin patch or ointment is used. Estrogen patch for hormone replacement therapy. Estrogen patch for hormone replacement therapy. Clonidine patch for hypertension. Then fentanyl patch for terminal stages of cancer pain. Fentanyl patch for the terminal stages of cancer pain and chronic pain. Nicotine patch for tobacco de-addiction. Okay, तो ट्रांसडर्मल पैचेस या ट्रांसडर्मल रूट या ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम का एग्जांपल क्या है? स्कोपोलामाइन पैच फॉर सियालोरिया एंड माउंटेन सिकनेस. नाइट्रोग्लिसरीन patch or ointment for prophylaxis of angina. Estrogen patch for hormone replacement therapy. Clonidine patch for hypertension. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ईस्ट्रोजन का पैच यूज़ करता है. हाइपरटेंशन के लिए क्लोनिडिन का पैच यूज़ करता है. फेंटनल पैच फॉर द टर्मिनल स्टेज कैंसर पेन एंड क्रोनिक पेन. फेंटनल पैच को कैंसर पेन और क्रोनिक पेन के लिए यूज़ करता है. एंड निकोटिन पैच इज़ यूज्ड फॉर डी एडिक्शन ऑफ टोबैको. See, this is the transdermal drug delivery system. This is the backing layer. This is drug reservoir. And this rate controlling membrane. This is adhesive layer. This one outer layer which is peeled off before application to the skin. So this is the outer layer which is peeled off before application to the skin. This one is the adhesive layer. तो इसके इसको पील करने के बाद this will be the adhesive layer. This is the rate controlling membrane. This is drug reservoir and this one is backing layer. So transdermal drug delivery system has backing layer, drug reservoir, rate controlling membrane, adhesive layer, and the last one is outer layer which is peeled off before application to the skin. This is backing layer, this is drug reservoir, this one is rate controlling membrane, adhesive layer, the last one is the outer layer which is peeled off before application to the skin. Backing layer, drug reservoir, rate controlling membrane, adhesive layer, and the outer layer which is peeled off before application to the skin. Advantages of transdermal therapeutic system. Self-administration is possible. Patient compliance is better. Duration of action is prolonged. Systemic side effects are reduced. Provides a constant plasma concentration of the drug. First pass metabolism is bypassed. So ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है. जो ड्यूरेशन है एक्शन का वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा. सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे. पेशेंट का कंप्लायंस बेटर होगा और एक कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन्ड होगा ड्रग का.
and it will bypass the first pass metabolism, self administration possible, patient compliance better, duration of action prolonged, systemic side effects reduced, constant plasma concentration of the drug, and bypasses the first pass metabolism. Disadvantages: expensive, local irritation may cause dermatitis and itching, patch may fall off unnoticed. So, transdermal therapeutic system, it can be expensive. Local irritation can cause dermatitis and itching, and the patch may fall off unnoticed. Expensive, local irritation will cause dermatitis and itching, and patch may fall off unnoticed. Next topic: bioavailability. Bioavailability is the fraction of drug that reaches systemic circulation from a given dose. It is the fraction of drug given that reaches the systemic circulation from a given dose. Intravenous route of drug administration give 100% bioavailability at it as it directly enters the systemic circulation. The term bioavailability is used commonly for drugs given by oral route. If two formulations of the same drug produce equal bioavailability, they are said to be bioequivalent. If formulations differ in bioavailability, they are said to be bioinequivalent. So bioavailability is the fraction of the drug that reaches the systemic circulation from a given dose. Intravenous route of drug administration has 100% bioavailability because it will directly enter the systemic circulation. तो ये जो टर्म है बायोअवेलेबिलिटी, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ओरल ड्रग्स. ठीक है, बिकॉज इंट्रावीनस का तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होता ही है. If two formulations of the same drug produce equal bioavailability, then they are said to be bioequivalent. If two formulations of the same drug produce equal bioavailability, they are said to be bioequivalent. If formulations differ in their bioavailability, they are said to be bioinequivalent. Let's see the factors affecting bioavailability. The factors which affect drug absorption, like physicochemical properties of the drug, route of drug administration, pH and ionization, food, presence of other drugs, area of absorbing surface, GI and other diseases also affect bioavailability of a drug. The factors affecting bioavailability of a drug are physicochemical properties of the drug, route of drug administration, pH and ionization, food, presence of other drugs, area of absorbing surface, gastrointestinal and other diseases, first pass metabolism, hepatic diseases, and enterohepatic cycling. Factors affecting bioavailability of a drug: physicochemical nature of the drug, route of administration, pH, ionization, food, presence of other drugs, area of absorbing surface, gastrointestinal and other diseases, first pass metabolism, hepatic disease, and enterohepatic cycling. Factors affecting bioavailability of drug: physicochemical properties of the drug, route of drug administration, pH and ionization. Physicochemical property of the drug, route of drug administration, pH, ionization, food. Food also affects the bioavailability of the drug, presence of other drug, gastrointestinal or other diseases, area of the absorbing surface, first pass metabolism, hepatic disease, and enterohepatic cycling. So there are 10 factors affecting bioavailability of a drug: physicochemical nature of the drug, route of administration, pH and ionization, food, presence of other drug, area of the absorbing surface, gastrointestinal and other diseases,
first pass metabolism, hepatic diseases, and enterohepatic cycling. First pass metabolism. See, pass metabolism, it also affects the bioavailability of a gas. First pass metabolism is also known as first pass effect or pre-systemic elimination. First pass metabolism, first pass effect, or pre-systemic elimination. When drugs are administered orally, they have to pass via the gut wall, then portal vein, liver, and then systemic circulation. When the route of administration is oral, the drugs have to pass the gut wall, then enter the portal vein, liver, and then the systemic circulation. During this passage, certain drugs get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation. ठीक है, तो जो ड्रग्स गट वॉल, पोर्टल वेन, लिवर तक गए, so they will get metabolized in this process before reaching the systemic circulation. During this passage, certain drugs get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation. This process is known as first pass metabolism. तो जब ड्रग को ओरली देते हैं, they will pass via the gut wall, portal vein, liver, and then enter the systemic circulation. तो इस प्रोसेस में, इस पैसेज में, certain drugs get metabolized and removed or inactivated before they reach the systemic circulation, and this is known as first pass metabolism. The net result is decreased bioavailability of the drug and diminished therapeutic response. Example drugs like lignocaine and isoprenaline. तो इस मेटाबॉलिज्म के कारण, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है एंड देयर विल बी डिमिनिश्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स. अगर कम ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक रीच करेगा, देन द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स विल बी डिमिनिश्ड. इसका एग्जांपल क्या है? लिग्नोकेन. लिग्नोकेन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, आइसोप्रेनालिन का गट वॉल में. लिग्नोकेन इन लिवर and isoprenaline in gut wall, they are the example of first pass metabolism. Consequence of high first pass metabolism: drugs which undergo extensive first pass metabolism are administered parenterally. Example, lignocaine is administered intravenously in ventricular arrhythmias. तो क्योंकि लिग्नोकेन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई दे आर given intravenously ताकि they bypass the first pass metabolism. Lignocaine is given intravenously in ventricular arrhythmias. Dose of the drug required for oral administration is more than that given by other systemic routes. Example, nitroglycerine. तो नाइट्रोग्लिसरीन को अगर ओरल रूट से देते हैं, then the dose will be more. ठीक है, बिकॉज नाइट्रोग्लिसरीन का भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. सो द डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन दैट गिवन बाय अदर सिस्टमिक रूट्स. एग्जांपल, नाइट्रोग्लिसरीन. सी, दिस इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. जो ड्रग है दैट विल एंटर द स्टमक, इट विल हैव टू क्रॉस द गट वॉल. गट वॉल से वो लिवर में जाएगा और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस में ही उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. दैट इज़ नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास इफेक्ट और प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन. ड्यूरिंग द पैसेज, सर्टेन drugs get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation, जिनसे उनका बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा. जैसे कि लिग्नोकेन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, और आइसोप्रेनालिन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है गट वॉल में. लिग्नोकेन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में और आइसोप्रेनालिन का गट वॉल में. सो लिग्नोकेन जो है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. क्योंकि अगर ओरली देंगे तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है,
तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगा ओरल रूट से. सो लिग्नोकेन इज गिवन इंट्रावीनसली इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. And the dose of drug required for oral administration is more than that given by other systemic routes. Example for nitroglycerine. Next topic is apparent volume of distribution. Apparent volume of distribution is written as small a vd. Apparent volume of distribution is defined as hypothetical volume of body fluid into which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single compartment. ठीक है, तो apparent volume of distribution जो है ये एक hypothetical volume है body fluid का. It is a hypothetical volume of body fluid in which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in the plasma. ठीक है, मतलब प्लाज्मा में जिस कंसंट्रेशन से वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी कंसंट्रेशन पे द अमाउंट ऑफ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग. ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है ऑफ द बॉडी फ्लूइड इन विच अ ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and the concentration should be equal to that in the plasma, assuming the body to be a single compartment. So apparent volume of distribution, it is a hypothetical volume of the body fluid at which a drug into which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single compartment. Apparent volume of distribution formula: total administered amount of drug divided by concentration of the drug in plasma. Apparent volume of distribution is equal to total administered amount of drug. Total administered amount of drug divided by concentration of drug in the plasma. Apparent volume of distribution is equal to total administered amount of the drug, total administered amount of the drug divided by concentration of the drug in plasma. Total administered amount of the drug divided by the concentration of the drug in plasma. So total administered amount of drug, total administered amount of the drug divided by the concentration of drug in plasma. Apparent volume of distribution is the total administered amount of drug divided by the plasma concentration of that drug. Drugs with high molecular weight, example heparin, or extensively bound plasma protein, example warfarin, are largely restricted to the vascular compartment, hence their apparent volume of distribution is low. तो हेपारिन का मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, वॉरफेरिन इज़ हाईली बाउंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, इसलिए इनका apparent वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है. हेपेरिन बिकॉज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट, warfarin because it is bound to the plasma protein, so its apparent volume of distribution is low. If the apparent volume of distribution of a drug is 14 to 16 liter, that is 0.25 milliliter per kg in a person weighing 70 kg, it indicates that the drug is distributed in the ECF. Example gentamicin and streptomycin. अगर किसी भी ड्रग का apparent volume of distribution is 14 to 16 liter, that means that drug is distributed in the ECF. Example gentamicin and streptomycin. इनका जो apparent volume of distribution है that is 14 to 16 liter, that means the drug is distributed in the ECF. Small water-soluble molecules like ethanol are distributed in total body water, and so apparent volume of distribution is approximately 42 liter. So ethanol जो है, it is a small water-soluble molecule. It is distributed in the total body water, and so it has a volume of distribution of 42 liter. The volume of distribution of ethanol is 42 liter.
Drugs which accumulate in tissues have a volume of distribution which exceeds the total body water, like chloroquine. It has a volume of distribution of 13,000 liter, digoxin of 500 liter. तो जो ड्रग्स टिश्यूज में अक्यूमुलेट कर जाते हैं दे हैव अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन द टोटल बॉडी वाटर. एग्जाम्पल chloroquine and digoxin. Chloroquine has a volume of distribution of 13,000 liter, digoxin of 500 liter. They chloroquine and digoxin have volume of distribution more than that of body water. Hemodialysis is not required, is not useful for the removal of drugs with large apparent volume of distribution in case of overdose. तो क्लोरोक्विन और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में या ओवरडोज के केस में हीमोडायलिसिस यूजफुल नहीं है बिकॉज दे हैव अ हाई apparent volume of distribution. Chloroquine या digoxin के overdose में hemodialysis is not the solution because they have a high apparent volume of distribution. In congestive cardiac failure, volume of distribution of some drugs can increase due to increase in ECF volume, example alcohol, or decrease because of reduced perfusion of tissues. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इथनॉल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में अल्कोहल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में अल्कोहल का वीडी इंक्रीज करता है. अल्कोहल का वीडी इंक्रीजेज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज VD of some drugs can increase due to increase in ECF volume. In uremia, the total body water can increase. Uremia में total body water can increase, which increases VD of small water soluble drugs. Toxins which accumulate can displace drugs from plasma protein binding site, resulting in increased concentration of the free form of the drug, which can leave the vascular compartment leading to increase in VD. तो यूरेमिया में टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज करता है. यूरेमिया में टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज करेगा इसलिए VD ऑफ स्मॉल वाटर soluble drugs increases. Toxins which accumulate can displace drug from the plasma protein. ठीक है, इसके कारण वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होंगे. जो टॉक्सिन्स है वो ड्रग्स को उनके प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देंगे तो फ्री फॉर्म में उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, विच कैन लीव द वैस्कुलर कंपार्टमेंट एंड दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन BD. तो टॉक्सिन्स के कारण दे विल बी डिस्प्लेस द ड्रग्स विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड thus their BD will increase. Fat lean body mass ratio, fat to lean body mass ratio, highly lipid soluble drugs get distributed to adipose tissue. जो highly lipid soluble drugs होते हैं they get distributed to the adipose tissue. If the ratio is high, the volume of distribution for such drugs will be higher. Fat acts as a reservoir for such drugs. तो अगर फैट ज़्यादा है बॉडी में, फैट इज टू लीन बॉडी मास रेशियो ज़्यादा है, तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएंगे और उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा. सो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और EVD, it is defined as the hypothetical volume of body fluid into which a drug is uniformly distributed at a concentration equal to that in the plasma, assuming the body to be a single compartment. Formula of apparent volume of distribution: EVD is equal to total amount of drug administered divided by concentration of the drug in plasma. Heparin का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है. वॉरफेरिन इज़ हाईली बाउंड टू प्रोटीन, इसलिए इसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है. अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 to 16 लीटर हो, ठीक है, दैट मीन्स द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ECF. एग्जाम्पल जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन.
इथेनॉल एक स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि टोटल बॉडी वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर्स होता है। क्लोरोक्वीन और डाइजॉक्सिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल बॉडी वाटर से भी ज़्यादा है। क्लोरोक्वीन का 13,000 लीटर है, डाइजॉक्सिन का 500 लीटर है। तो इनके टॉक्सिसिटी में हीमोडायलिसिस इज़ नॉट यूजफुल। डाइजॉक्सिन और क्लोरोक्विन की टॉक्सिसिटी में हीमोडायलिसिस इज़ नॉट यूजफुल। ठीक है। फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में अल्कोहल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। यूरीमिया में टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज करेगा, तो जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है उनका भी वीडी इंक्रीज करता है। टॉक्सिन्स जो है वो ड्रग्स को उनके प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करेंगे, जिसके कारण उनका भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। फैट एस टू लीन बॉडी मास रेशियो अगर ज़्यादा है, मतलब अगर ज़्यादा फैट है, तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो एडिपोज टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनका भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो फैट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर सच हाईली लिपिड soluble drugs. Next topic is plasma protein binding. Plasma protein binding. Many drugs bind to the plasma protein like albumin, alpha 1 acid glycoprotein. Albumin and alpha 1 acid glycoprotein are plasma protein. Albumin and alpha 1 acid glycoprotein. Clinical importance of plasma protein binding. तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, दे विल एंटर द सर्कुलेशन, दे विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्बुमिन, बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्बुमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जो बाउंड फॉर्म है, it cannot exert pharmacological action, acts as temporary store of the drug. तो ये जब प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं, that is when they are in bound form, they cannot exert their pharmacological action and hence act as temporary store of the drug. ठीक है, ये जब फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होंगे then they will be pharmacologically active. तो जो ड्रग्स है वो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, दे एंटर द सर्कुलेशन, दे बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्बुमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो बाउंड फॉर्म होता है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं एग्जर्ट करेगा, ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। सी, drugs that are highly bound to plasma protein have a low volume of distribution. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिलेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। बाउंड फॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलाई, हेंस excretion of the highly plasma protein bound drugs by filtration is delayed. क्योंकि जो ड्रग है अगर वो बाउंड फॉर्म में रहेंगे तो उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन इज़ डिलेड। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है तो वो फिल्टर्ड नहीं हो पाएंगे, दैट्स वाई देयर एक्सक्रीशन इज़ डिलेड। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे कि सल्फा डायाजीन इज़ लेस plasma protein bound and has a duration of 6 hours, whereas sulfadoxine, it is highly plasma protein bound and it has a duration of action of 1 week. सल्फाडायाजीन क्योंकि वो प्रोटीन से कम बाउंड होता है इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 6 hours. सल्फाडॉक्साइन इज हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड and they have a action for 1 week. Sulfadoxine is highly protein bound, plasma protein bound. Sulfadoxine is highly plasma protein bound, and so they have a action of duration of action for 1 week. Sulfadiazine, they are less plasma protein bound, so duration of action 6 hours. Sulfadoxine are highly plasma protein bound and has a duration of action of 1 week. In case of poisoning,
Highly plasma protein bound drugs are difficult to be removed by hemodialysis. ठीक है, तो जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस इन डिजीजेस लाइक अनीमिया, renal failure, chronic liver disease, etc. Plasma albumin levels are low, that is hypoalbuminemia. तो CLD में या रीनल फेलियर में या अनीमिया में एल्बुमिन का लेवल कम होता है. सो देयर विल बी डिक्रीज इन बाउंड फॉर्म एंड इंक्रीज इन द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग विच कैन लीड टू ड्रग टॉक्सिसिटी. सो अनीमिया, रीनल फेलियर या क्रॉनिक लिवर फेलियर में एल्बुमिन कम होगा तो जो फ्री फॉर्म है वो ज़्यादा होगा. सो दैट कैन लीड टू ड्रग टॉक्सिसिटी. Plasma protein binding can cause displacement interaction. More than one drug can bind to the same site of the plasma protein. The drug with higher affinity will displace the one having lower affinity and may result in sudden increase in the free concentration of the drug with lower affinity. तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के कारण डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन हो सकता है. एक प्लाज्मा प्रोटीन के एक साइट पे एक से ज़्यादा ड्रग्स बाइंड कर सकते हैं. तो जो ड्रग का ज़्यादा एफिनिटी होगा वो ड्रग बाइंड करेगा. द ड्रग विथ हायर एफिनिटी विल डिस्प्लेस द वन विथ लोअर एफिनिटी. इसके कारण जो लोअर एफिनिटी वाला ड्रग है उसका टॉक्सिसिटी हो सकता है. ठीक है, देयर कैन बी सडन इंक्रीज इन द फ्री कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग विथ लोअर एफिनिटी. सो प्लाज्मा प्रोटीन के एग्जांपल क्या है? एल्बुमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, वो सर्कुलेशन में आते हैं. जो एसिड ड्रग्स होंगे दे विल बाइंड टू एल्बुमिन, बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. जो बाउंड फॉर्म होता है वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सर्ट नहीं करेगा. फ्री फॉर्म जो है दैट एक्सर्ट्स इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होता है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिले होगा. ज़्यादा वो प्रोटीन से बाउंड होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा. बाउंड फॉर्म जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगा. ठीक है, तो एक्सक्रीशन विल बी डिलेड. उस ड्रग का एक्सक्रीशन विल बी डिलेड. हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा. मेटाबॉलिज्म विल बी डिलेड, एक्सक्रीशन विल बी डिलेड. जो ड्रग्स हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होता है जैसे कि सल्फाडॉक्साइन, इट हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट इज़ 1 वीक. सल्फाडायाजीन, इट हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 6 आवर्स. सल्फाडायाजीन लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है सल्फाडायाजीन, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर्स होता है. सल्फाडॉक्साइन इज़ हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, दैट्स वाई दे हैव अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 1 वीक. पॉइजनिंग के केस में जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं उनके लिए हीमोडायलिसिस इफ़ेक्टिव नहीं होता है. अनीमिया, रीनल फेलियर, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के कारण एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है. दैट कैन रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के कारण डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शंस भी हो सकता है. प्लाज्मा प्रोटीन के सेम साइट पे एक से ज़्यादा ड्रग बाइंड कर सकते हैं. तो जो ड्रग होगा जिसका एफिनिटी कम होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा और जो ड्रग होगा जिसका हायर एफिनिटी होगा वो बाइंड कर जाएगा. तो इस केस में जो लोअर एफिनिटी वाला ड्रग है उसका फ्री कंसंट्रेशन में सडन इंक्रीज आएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म. Biotransformation or drug metabolism. Chemical alteration of the drug in living organism is known as biotransformation. Chemical alteration of the drug in living organism is known as biotransformation. The metabolism of a drug usually converts lipid soluble and unionized compounds into water soluble and ionized compounds. Hence, not reabsorbed in the renal tubules and are excreted. So मेटाबॉलिज्म के कारण लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड कंपाउंड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड हो जाएंगे. मेटाबॉलिज्म यूजुअली कन्वर्ट्स द lipid soluble and unionized compounds
into water soluble and ionized compounds, hence not reabsorbed in the renal tubules and are excreted. ये जो वाटर soluble और ionized compounds होंगे ये renal tubules में absorb नहीं होंगे and they will be excreted. If the parent drug is highly polar, that is ionized, then it may not get metabolized and excreted as such. अगर जो parent drug है वही ionized है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मेटाबॉलिज्म हो और वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो जाए. ठीक है, मेटाबॉलिज्म के कारण लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड ड्रग्स जो है वो वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, और ये जो वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड कंपाउंड है ये रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे. अगर जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो आयनाइज्ड है तो it may not get metabolized and is excreted as such. Sites: liver is the main site of drug metabolism. Other sites are GI tract, kidney, lungs, blood, skin, and placenta. Liver is the main site of drug metabolism. Other sites are GI tract, kidney, lungs, blood, skin, and placenta. Liver is the main site. Other sites: GI tract, kidney, lungs, blood, skin, and placenta. The end result of drug metabolism is inactivation, but sometimes a compound with pharmacological activity may be formed as shown below. ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मेन साइट होता है लिवर, बट जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन, प्लासेंटा में भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म के कारण इनएक्टिवेशन हो जाता है ड्रग का. बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट कैन बी दैट कैन हैव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. ठीक है, जैसे कि एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जो एक्टिव ड्रग है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो गया है. जैसे कि फिनोबार्बिटॉन एक्टिव ड्रग है, ये हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटॉन में चेंज हो जाता है जो कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट है. फिनोबार्बिटॉन एक्टिव होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट दैट इज हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटॉन. Phenytoin, which is an active drug, it gets converted to p-hydroxyphenotine, which is the inactive metabolite. Phenobarbital, active metabolite. Hydroxyphenobarbital, inactive metabolite. Phenytoin, active metabolite, active drug which gets converted to p-hydroxyphenotine, which is the inactive metabolite. Then active drug can be converted to active metabolite. जैसे कि कोडीन, ये एक्टिव ड्रग है. मॉर्फिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट. डाइजीपाम इज एक्टिव ड्रग. ऑक्साजीपाम इज एक्टिव मेटाबोलाइट. कोडीन इज एक्टिव ड्रग. Morphine is active metabolite. Codeine is the active drug which is converted to morphine, the active metabolite. Diazepam is the active drug which gets converted to oxazepam, the active metabolite. In certain cases, inactive drug or prodrug will be converted to active metabolite like levodopa to dopamine and prednisone to prednisolone. So levodopa inactive drug है, dopamine is the active metabolite, prednisone is the inactive drug and prednisolone is the active metabolite. ठीक है, so biotransformation means drug metabolism. Chemical alteration of the drug in living organism is called biotransformation. मेटाबॉलिज्म से जनरली जो लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड बन जाते हैं ताकि वो रीअब्सॉर्ब ना हो वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड ड्रग रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे. ठीक है, मेन साइट होता है लिवर. अदर साइट्स इंक्लूड जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन एंड प्लासेंटा. End result of drug metabolism is inactivation, but sometimes a compound with pharmacological activity can also be formed. ठीक है, मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिज्म के कारण जो एक्टिव ड्रग है इट गेट्स कन्वर्टेड टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट. phenobarbital is an active drug, it gets converted to hydroxyphenobarbital which is the inactive metabolite. Phenytoin is the active drug which gets converted to hydroxyphenytoin which is the inactive metabolite.
certain cases में active drug will be converted to active metabolite, जैसे कि codeine gets converted to morphine and diazepam gets converted to oxazepam. Codeine gets converted to morphine, diazepam gets converted to oxazepam. Then certain cases में pro-drug, that is inactive drug, will be converted to active metabolite, जैसे कि levodopa gets converted to the active metabolite dopamine. Prednisone, which is an inactive drug, gets converted to prednisolone, the active metabolite. Let's see the pathways of drug metabolism. Drug metabolic reactions are grouped into two phases. Phase 1 या non-synthetic reactions, phase 2 या synthetic reactions. तो phase 1 या non-synthetic reactions में we have oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and decyclization. Phase 1 reactions include oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and decyclization. Phase 1 reaction includes oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and decyclization. Phase 1 reaction includes oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and decyclization. Phase 2 reactions are the conjugation reactions like glucuronidation, acetylation, sulfation, methylation, glutathione conjugation and glycine conjugation. Phase 2 reaction are conjugation reactions like glucuronidation, acetylation, methylation, sulfation and glutathione conjugation and glycine conjugation. Phase 2 reaction examples: glucuronidation, acetylation, sulfation, methylation, glutathione conjugation and glycine conjugation. Drug metabolizing enzymes. Drug metabolizing enzymes are grouped into two groups: microsomal and non-microsomal enzyme system. Drug metabolizing enzymes are classified into two groups: microsomal and non-microsomal enzyme systems. Hoffman elimination. Drugs that can be inactivated without the need of enzyme. This is known as Hoffman elimination. Means drugs can be inactivated without the need of enzymes. जैसे कि atracurium, a skeletal muscle relaxant, undergoes Hoffman elimination. Hoffman elimination means the drug will be inactivated without the need of enzyme. Example: atracurium, a skeletal muscle relaxant, undergoes Hoffman elimination. Next topic is enzyme induction. Repeated administration of certain drugs increases the synthesis of microsomal enzymes. Repeated administration of certain drugs के कारण microsomal enzymes का synthesis increase होता है. Repeated administration of certain drugs increases the synthesis of microsomal enzymes. This is known as enzyme induction. Okay. कुछ ड्रग्स के रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माइक्रोसोमल एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज होता है. दिस इज नोन एज एंजाइम इंडक्शन. द ड्रग इज रेफर्ड टू एज एंजाइम इंड्यूसर्स लाइक rifampicin, phenytoin, barbiturates, carbamazepine and griseofulvin. These are examples of enzyme inducers. ठीक है, तो इन ड्रग्स के कारण माइक्रोसोमल एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज होता है. rifampicin, phenytoin, barbiturates, carbamazepines and griseofulvin. So BC, that is barbiturates, carbamazepine, BR, phenytoin, rifampicin and griseofulvin. BC, barbiturates, carbamazepine, BR, phenytoin and rifampicin and G for griseofulvin. So इन ड्रग्स के कारण माइक्रोसोमल एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज होता है. क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन. एंजाइम इंडक्शन में एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स. एंजाइम इंडक्शन के कारण ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट होगा, thus reducing the
ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग्स एक्शन लीडिंग टू थेराप्यूटिक फेलियर। ठीक है, तो एंजाइम इंडक्शन के कारण ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल रिफैम्पिसिन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। Rifampicin induces drug metabolizing enzyme of oral contraceptives, thus enhancing its metabolism and leading to its contraceptive failure. तो रिफाम्पिसिन के कारण कुछ एंजाइम्स मेटाबोलाइज होंगे, कुछ एंजाइम्स इंड्यूस होंगे विच विल मेटाबोलाइज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन के कारण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है एंड रिफाम्पिसिन लीड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ऑटो इंडक्शन। ऑटो इंडक्शन may lead to development of drug tolerance. Example, carbamazepine enhances its own metabolism. ऑटो इंडक्शन के कारण ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो सकता है, जैसे कि कार्बामाजेपिन के कारण उसका खुद का मेटाबॉलिज्म होता है। कार्बामाजेपिन enhances its own metabolism. Auto induction may lead to drug tolerance. कार्बामाजेपिन जो है वो अपना खुद का मेटाबॉलिज्म इन्हांस करता है। एंजाइम इंडक्शन कैन लीड टू ड्रग टॉक्सिसिटी। Increased incidence of hepatotoxicity with paracetamol in alcoholics is due to overproduction of toxic metabolite of paracetamol. तो एंजाइम इंडक्शन के कारण ड्रग का टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, जैसे कि अल्कोहलिक्स में पैरासीटामोल के कारण हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है। ठीक है, अल्कोहलिक्स में पैरासीटामोल के कारण हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। अल्कोहल जो है वो सर्टेन एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा जिसके कारण पैरासीटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होगा विच इज़ हेपाटोटॉक्सिक। प्रोलॉन्ग्ड फेनिटोइन थेरेपी may produce osteomalacia due to enhanced metabolism of विटामिन B3। प्रोलॉन्ग्ड फेनिटोइन थेरेपी के कारण विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगा एंड दिस लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया। फेनिटोइन के कारण विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है एंड दिस लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया। एंजाइम इंड्यूसर्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स कैन प्रेसिपिटेट porphyria due to overproduction of porphobilinogen। बार्बिट्यूरेट्स जो है जो कि एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, इट कैन प्रेसिपिटेट porphyria because of overproduction of porphobilinogen. Barbiturates can induce porphyria. Enzyme induction can also be beneficial, like phenobarbital in neonatal jaundice. Phenobarbital induces glucuronide transferase enzyme, hence bilirubin is conjugated and jaundice is resolved। ठीक है, तो एंजाइम इंडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ ड्रग्स के रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण माइक्रोसोमल एंजाइम्स का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स, कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन, आर से रिफैम्पिसिन और ग्रीसियोफेल्विन। ठीक है, barbiturates, carbamazepine, rifampicin, phenytoin, griseofulvin are example of enzyme inducers. Clinical importance of enzyme induction. एंजाइम इंडक्शन के कारण ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सकता है, तो उसके कारण उनका थेराप्यूटिक फेलियर होगा, जैसे कि एग्जांपल रिफैम्पिसिन के कारण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है एंड दस रिफैम्पिसिन लीड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ऑटो इंडक्शन के कारण ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, जैसे कि कार्बामाजेपिन इट एनहांसेस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। ऑटो इंडक्शन के कारण ड्रग टॉलरेंस डेवलप होता है, कार्बामाजेपिन एनहांसेस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देन एंजाइम इंडक्शन के कारण ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। अल्कोहलिक्स में पैरासीटामोल के कारण हेपाटोटॉक्सिसिटी का इंसिडेंस इंक्रीज होता है। अल्कोहलिक्स में पैरासीटामोल का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो ओवर प्रोड्यूस होता है एंड इट लीड्स टू हेपाटोटॉक्सिसिटी। प्रोलॉन्ग्ड
फेनिटॉइन थेरेपी कैन कॉज ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि फेनिटॉइन के कारण विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, तो फेनिटॉइन के कारण ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। फेनिटॉइन के कारण विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म होता है, तो इट लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया। Barbiturates barbiturates can precipitate porphyria because of overproduction of porphobilinogen. Barbiturates overproduce porphobilinogen. Barbiturates के कारण porphyria can be precipitated. Enzyme induction can also be beneficial. ठीक है, जैसे कि नियोनेटल जॉन्डिस में फिनोबार्बिटॉन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को इंड्यूस करता है। फिनोबार्बिटॉन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को इंड्यूस करता है, जिसके कारण बिलीरुबिन इज कंजुगेटेड एंड जॉन्डिस इज रिजॉल्व्ड। फिनोबार्बिटॉन नियोनेटल जॉन्डिस में बेनिफिशियल होता है। फिनोबार्बिटॉन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को इंड्यूस करता है। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज के इंडक्शन के कारण बिलीरुबिन is conjugated and jaundice is reduced. Next topic is plasma half-life. Plasma half-life is the time required for the plasma concentration of a drug to decrease by 50% of its original value. So plasma half-life is the time required for the plasma concentration of a drug to decrease by 50% of its original value. Plasma half-life of lignocaine is 1 hour. For aspirin it is 4 hour. So lignocaine 1 घंटे में 50% डिक्रीज़ हो जाता है। एस्पिरिन 4 घंटे में 50% डिक्रीज़ होता है। लिग्नोकेन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर, एस्पिरिन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ हेल्प्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ से हम ड्रग एक्शन के ड्यूरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एक्शन के ड्यूरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट। At steady state, the amount of drug administered is equal to the amount of drug eliminated in the dose interval. ठीक है, steady state मतलब the amount of drug administered is equal to the amount of drug eliminated in the dose interval. It takes approximately 4 to 5 half-lives to reach the steady state during repeated administration of the drug. A drug is almost completely eliminated in 4 to 5 half-lives after single administration. Okay. So plasma half-life, it is the time required for the plasma concentration of a drug to decrease by 50% of its original value. लिग्नोकेन का हाफ लाइफ 1 आवर होता है, एस्पिरिन का हाफ लाइफ 4 आवर्स होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। It helps to determine the duration of drug action. It helps to determine the frequency of drug administration and to estimate the time required to reach the steady state. At steady state, the amount of drug administered is equal to the amount of drug eliminated in the dose interval. ठीक है, लगभग 4 से 5 हाफ लाइफ लगते हैं टू रीच द स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग द repeated administration of the drug. It takes approximately 4 to 5 half-lives to reach the steady state during repeated administration of the drug. A drug is almost completely eliminated in the 4 to 5 half-lives after single administration. So plasma life से हम drug एक्शन का ड्यूरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, वो टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं व्हेन इट विल रीच द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। ठीक है, लगभग 4 से 5 हाफ लाइफ्स लगते हैं टू रीच द स्टेडी स्टेट and the drug is almost completely eliminated in 4 to 5 half lives after single administration. अगर एक बार ड्रग को एडमिनिस्टर कर दे तो इट टेक्स 4 to 5 half lives to get
almost completely eliminated. Next term is clearance. Clearance of a drug is defined as the volume of plasma from which the drug is removed in unit time. Clearance is defined as the volume of plasma from which the drug is removed in unit time. Clearance is equal to rate of elimination divided by plasma concentration of the drug. Clearance is defined as the volume of the plasma from which the drug is cleared per unit time. Clearance is equal to rate of elimination divided by plasma concentration of the drug.